Hi everyone, welcome back to the channel. So there are many candidates who want to do an internship, but they think like that they don't have that much skills to do an internship. And rather than that, there are many candidates who have already applied for the internship program, but they didn't get any confirmation from the companies. So in this video, I am going to discuss everything about the internships. So I have divided the video in the two parts. In the first part, I am going to cover what is internship and what is the importance of internship. And in the second part, if you don't have any skills, then what should be your strategy to apply for the internship program, that also I am going to discuss in this video. So for example, आप graduation या post graduation में हो, so you will get the two opportunities. First is your final placements. There are many companies जो कि students को hire करते हैं in their final placements. At the same time, in the second year and third year, one internship opportunity is also available to you. So there are many companies जो कि second year, third year, अगर आप MBA में भी हो तो भी आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपनीज हायर करती हैं एंड दे गेट अ चांस टू वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. And at the same time you can earn the money also, but earning the money is the secondary motto. Here you can learn many things during your internships. So जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, so you will need two kind of skills. First is your hard skills and second is your soft skills. So soft skills you can develop by yourself only, but for the hard skills you need to showcase the documentation. And for that hard skills means like अगर आपके कुछ achievements है, आपने कुछ internships की हैं या अभी तक आपको अगर कुछ work experience है, so that everything comes in the hard skills. So doing an internship is the best option to showcase your hard skills to the interviewer or to the organization. So आप अगर graduation में या post graduation में हो, so definitely you should pursue at least one internship during your studies. Now the question is how to get an internship opportunity if you don't have any skills. आपको ऐसे लगता है कि आपके पास में कुछ भी स्किल्स नहीं हैं, बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप में कुछ और क्वालिटीज़ है, सो दैट आर काउंटेड इन द स्किल्स ओनली. सो यू डिडंट रिक्वायर्ड मच स्किल्स टू गेट एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको इसीलिए मिल रही है, आप वो ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए काम करने जा रहे हो क्योंकि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ सको, to gain the skills, and that is more than sufficient. अगर आपके पास में qualities हैं, on that basis only you can get the opportunity to work with the organization as an internship basis. So to get an internship opportunity, you can use the LinkedIn platform to find the internship opportunity. So in the LinkedIn, you can use the search feature. For example, अगर आप कोई finance से लेके internship opportunity देख रहे हो, so just search for finance. And then you will see the list of jobs in front of you. But आपको इसमें particular company select करनी है. So you will have the list of all companies in front of you. But आपको particular location select करना है. For example, अगर आपने India select किया है, so you will get the list of Indian companies. But there are two type of opportunities you will get over here. First is the growing companies and second is already grown companies like TCS, Google, Microsoft. So there are many candidates, they want to work with the grown companies only. But अगर आपके पास में skills नहीं है और आपको कुछ ना कुछ सीखना है, so you should go with the growing companies. So at that time अगर आपने grown companies में internship के लिए opportunities के लिए अगर already apply किया है, so you have a very less chance कि आपको confirmation वहाँ से आए. So अगर आपने apply किया है, still if you didn't get any type of confirmation, so आप LinkedIn पे ही एक option है which is like company size. So according to your requirement आप company size select कर सकते हो. जो भी already grown companies है उनका company size ज़्यादा रहेगा, but which are the growing companies उनका company size जो रहेगा वो कम रहेगा. So you have to select that, और जो भी company आपने select की है on that basis you need to apply. सो कंपनी साइज सिलेक्ट करने के बाद भी देर आर सो मेनी कंपनीज यू विल सी. सो इनमें से कौन सी कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है, इफ़ यू वांट टू सी दैट देन यू नीड टू अप्लाई फॉर द जॉब लिस्टिंग ओवर हियर. In that you will find the list of multiple jobs over here. Now you can just visit the page of that particular company and can find out the number of particular person who is hiring the candidates for that particular position. So try to connect them, or you can use the referrals and recommendations also to get an internship opportunity. Here you can make the use of hashtag also to search the right candidate.
For example, if you search with hashtag marketing, so at that time you will see the people with marketing. So you can just get in touch with such people to give you the referrals. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे कैंडिडेट को भी रीच आउट कर सकते हो जो कि ऑलरेडी वो पोजीशन पे वर्क कर रहा है, और अगर आपने उसको रीच आउट किया है सो उसका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में ही इज़ लिविंग दैट जॉब, सो एट दैट टाइम यू कैन जस्ट आस्क हिम फॉर द रेफरल ऑल्सो. सो दिस ऑल्सो यू कैन डू विद द लिंक्डइन. सो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. रादर देन दिस यू नीड टू वर्क ऑन योर रिज्यूम ऑल्सो. देर आर लाइक जो कंपनीज में आप अप्लाई करते हो, सो यू आर नॉट द ओनली वन कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप. देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी. सो एट दैट टाइम आपके रिज्यूम में ऐसी कुछ स्किल्स होनी चाहिए विच शोकेस यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, and on that basis only the organization is going to select you. So you need to work on your resume also, mention your skills, develop your hard skills as well as soft skills, and mention that on a resume, because on the basis of your skills only you are getting the shortlist call. लाइक आप जब भी कोई इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, सो आपका पहले रिज्यूम ही होता है जो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इंटरव्यूअर के सामने रखता है. सो इट शुड बी अ प्रेजेंटिव रिज्यूम जिसमें सब जो स्किल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, आपकी मैक्सिमम जो स्किल्स अचीवमेंट्स हैं वो वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए. So this is all about internship opportunities you can get with the help of the LinkedIn platform. So अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स, क्वेरीज हैं, so you can let me know in the comments. Thank you for watching the video. Do like the video and subscribe the channel.